My dear students, I am Dr. Gajendra Prasad Singh, Head and Associate Professor, Department of Chemistry, Jamnilal College, Hajipur, Vaishali, a constituent unit of BRA, Bihar University, Muzaffarpur. Today, I shall discuss addition reactions. My dear students, I want to tell you or go some back organic reactions have been divided into three parts. First, that was substitution reaction. Now substitution reaction is complete, well complete. Now today we are here to discuss addition reactions. In Hindi, addition reaction is called योगशील प्रतिक्रियाएं, addition reactions. योगशील प्रतिक्रियाएं और एडिशन रिएक्शन योगशील प्रतिक्रिया. A reaction in which two reacting species, organic compound which is called substrate and the reagent, both combine to give a single product is called an addition reaction. वह प्रतिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक और प्रतिकारक का योग होता है और योग के फलस्वरूप प्रतिफल प्राप्त होता है, योगशील प्रतिक्रिया कहलाती है. In other words, we can say organic compounds containing multiple bonds, double or triple bonds, undergo this type of reaction. हम बोल सकते हैं कि कार्बनिक प्रतिक्रियाओं में डबल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिक योगशील प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं. इन दिस रिएक्शन यानी योगशील प्रतिक्रिया में वन पाई बॉन्ड इज ब्रोकन एंड टू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. हम यो कह सकते हैं कि योगशील प्रतिक्रिया में एक पाई बंधन टूटता है और दो सिग्मा बंधनों का निर्माण होता है. Thus we can say, we can also define addition reaction in other way कि that reaction in which one pi bond is broken and two sigma bonds are formed is called addition reaction. Now it can be understood by giving examples. Now we come to these first examples. When ethylene reacts with hydrogen bromide, ethyl bromide is obtained. CH2 double bond CH2 plus HBr reacts to give CH3 CH2 Br, which is shown in the given note also. Here we see that ethylene is a compound containing carbon-carbon double bond, and when it is treated with hydrogen bromide, a new compound ethyl bromide or bromoethane is obtained. This is an example of addition reaction. Now, on the basis of reaction mechanism
addition reactions have been divided into three types. First is known as free radical addition reaction. Second is electrophilic addition reaction. And the third is न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रतिक्रिया क्रियाविधि के आधार पर योगशील प्रतिक्रियाओं को तीन भागों में विभक्त किया गया है. क्रियाविधि के आधार पर इट इज टू बी अंडरस्टूड, इट इज वेल नोन टू अस कि mechanism is very important factor in the organic reactions. So क्रियाविधि के आधार पर इस योगशील प्रतिक्रिया को तीन वर्गों में विभक्त किया गया है. फर्स्ट है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, मुक्त मूलक योगशील प्रतिक्रिया. सेकेंड इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही योगशील प्रतिक्रिया. एंड द थर्ड दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी केंद्रक स्नेही योगशील प्रतिक्रिया. हिंदी में हम बोल सकते हैं कि योगशील प्रतिक्रिया को तीन भागों में विभक्त किया गया है. पहला है मुक्त मूलक योगशील प्रतिक्रिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगशील प्रतिक्रिया और तीसरा है केंद्रक स्नेही योगशील प्रतिक्रिया. अब हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं. नाउ वी डिस्कस फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन in which the attacking reagent is a free radical is called free radical addition reaction. हम ये बताना चाह रहे हैं कि योगशील प्रतिक्रिया जिसमें आक्रमणकारी प्रतिक्रिया मतलब प्रतिक्रिया में जो प्रतिकारक है दो खंडों में विभक्त हो जाए और उसमें जो प्रतिकारी है आक्रमणकारी प्रतिकारक है वो पहला जो हो वो मुक्त मूलक हो, यानी मुक्त मूलक के माध्यम से संपादित होने वाली योगशील प्रतिक्रिया को हम लोग फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहते हैं. एडिशन रिएक्शन इन विच द अटैकिंग रिएजेंट इज ए फ्री रेडिकल. फर्स्ट अटैकिंग जो होगा फर्स्ट अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं, प्रथम आक्रमणकारी प्रतिकारक उसको मुक्त मूलक होना है, तब जाकर वह मुक्त मूलक योगशील प्रतिक्रिया कहलाता है. इसके लिए हम एग्जाम्पल में बात करते हैं कि एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू इथाइलिन और इथीन in presence of sunlight or peroxide catalyzed to give bromo ethane और ethyl bromide. हम जानते हैं कि इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें प्रथम आक्रमणकारी प्रतिकारक कोई मुक्त मूलक होगा. We know in this reaction, in free radical addition reaction, attacking reagent should be free radical, and we know that free radical is produced by homolytic fission of the reagents. For this homolytic fission, energy is required, that is either in the form of light, heat or peroxide etc. Here I want to say you that addition to bromine to
ethylene in presence of sunlight or peroxide, catalyzed, peroxide, oxide, catalyzed, gives bromoethane or ethyl bromide. CH2, double bond CH2, it is ethylene or ethene plus HBr, hydrogen bromide, in presence of peroxide reacts to give CH3, CH2, Br. It is bromoethane. Here we see that ethylene, carbon-carbon double bond. Carbon, here carbon-carbon there is double bond. One is sigma bond and the other is pi bond. Sigma bond is stronger than pi bond. So, in this reaction, pi bond is broken. And I have already told you, one pi bond is broken and two sigma bonds. In the product, two sigma bonds are formed. And the reagents, both the free radicals goes to join the carbon atoms, different carbon atoms. That means carbon number 1 and carbon number 2, both the free radicals go to join to give the product. There now we can see CH2 double bond CH2 plus HBr in presence of sunlight or peroxide gives us CH3 CH2 Br, that is bromoethane or ethyl bromide. Its mechanism can be given as here hydrogen bromide. There is single bond between H and Br. Under homolytic fission in presence of peroxide, hydrogen free radical and bromine free radical is produced. Now this bromine free radical comes near the organic compound ethylene and its carbon-carbon double bond, that means one pi bond between carbon and carbon, is broken and this Br free radical combines with one carbon atom, and this free radical now again reacts with hydrogen bromide, where hydrogen bromide H free radical, H one electron, that is hydrogen free radical, combines with the another carbon atom of that free radical to give ethyl bromide, and a Br free radical is produced. Now this Br free radical and H free radical combines to give us HBr. Thus, we see when ethylene reacts with hydrogen bromide in presence of peroxide gives ethyl bromide. This is about free radical addition reaction. Thank you all. Good morning, and rest will be discussed in the next class.